topic is, can parents be friends with children? And personally ये topic मेरे दिल के बहुत करीब है. When we were deciding on the topic, the first person who came to my mind was my mom. And I think it wasn't easy for us to be where we are today, sharing this amazing friendship bond. But जब मैंने थोड़ा और reflect किया, I realized that friendship एक process है, and this process is important, क्योंकि दोस्ती में mutual understanding के develop होने से पहले बहुत झगड़े होते हैं. And I'm pretty sure that you would agree when I say this. And आज हम इसी process को discuss करेंगे. We are going to explore the dynamics of friendship between parent and child. Now, I would like to introduce you. You all already know Mr. Tushar, but if not, for new people who have joined us, this is Mr. Tushar, who has organized and moderated several panel discussion across the nation, and he's a father himself. So I think he'll be the best person here to sort of give his views, because he, as we know, that he's also friends with his children. So it will be amazing to see that what are the methods, or what is the process that he followed. If he can give us a little bit of insight and we can discuss the same, it is going to be amazing. Over to you, Tushar sir. Okay, so good evening, everyone. Very happy to see all of you. Sunil sir, welcome back. Yes, sir. We have Suyash and so many people. I'm so happy. Bhuvan. Sir, I would like to introduce, there is new sir, Deepak Dalal sir. He's a sports teacher. Wow, okay, Deepak sir, sports teacher. All right. So maybe Deepak sir can help us in the end of this session, because I have something for him. All right, बिल्कुल सर. so hello sir. So question today is, can parents be friends with children? First person coming in my mind. Hello, Mrs. Kanani. Welcome back. Welcome. So first point coming to my mind, first person coming to my mind is my dad, right? So he was as humorous and as funny as me. But again, before I start, I would like to tell everyone, try to be on video. What we are going to do from next week onwards is, we are going to make the analytical reports of this particular sessions every week, and we are going to share with more than 50,000 schools in India, to all the principals and trustees and colleges, of course. So please be on video, share your points. Already Twinkle has shared her the rules. We want to create light, not heat, right? And she's also introduced our company. All right, so coming back to our topic of the day, which is kind of close to my heart. If you ask me, as a child, as a children or as a child, my answer would be, I don't know, because my dad was my best friend, because he was like me, kind of a spoiled brat, flamboyant. So I think it is important that which parent, your mother or a father, who's like you, who has something in common, can be your friend. That's what you could be comfortable with, is what my point of view is. Secondly, I think in parents, I would also include the elder sister or brother, if you have one. I would also, personally, this is my point of view, okay? In parents, I would also include my elder sister, my second number sister, who's elder to me. I'm the third. I would take her as my friend. Fortunately, both of us birthday is on the same day, but there's a 2 years of gap, So, but I would still take her as my elder, as my friend, who I was very comfortable to share with. I've had a very classic life, in my young time. So I would also be comfortable to share with her. Mom and dad was always a mom and dad, MOM and DAD. This was a very, very, for me, this was a very, very dangerous three letters. Because since childhood, they used to, try to make me as disciplined as possible, as cultured as possible, as decent as possible, as chivalrous as possible. But my sister was my best friend, I would say. Her name is Jigna. She's in US right now. We both, as I said, we both had the birthday on the same day, but there's a two years of difference between both of us.
but I would take her as my best friend. So I would take her as my parent also, because even today when I get stuck anywhere, I call her first, or I message her first, that, okay, this is the problem. What do you think I should do? So parents for me, not necessary is always your mom and dad. It could also be your elders. I think in last session, or I think Twinkle, when we talk during our working hours, sorry, Rushali, one of our colleague, Rushali, when we talk to her, she always gives respect to a lot to her sister. So similarly, it connects to me, that, okay, not necessarily mom and dad or mommy and daddy can be your best friend, but even your sister, your elder brother, sometimes it could be your younger sister and younger brother also. So it's more that you need a friend in your immediate blood relation family more than your parents. This is my point of view again. As I said, I was also very comfortable with my dad, but the way I could express my concerns or reality of my life to my sister, I could not express to my dad. I had to be decent. So, but my sister, I could use my normal language, slangs and all that, where I could tell her that I am in a problem and I need your help. So this is what my point of view would be. We also have Rahul, who's one of our common colleague and common friend, who would also be a very good audience for today, or I would say speaker for today, because I've spent a lot of time with him, and I do feel that there is a personal connect between me and Rahul. So Rahul, I would encourage you to speak, maybe not now, but whenever you want to speak, just raise your hand. So everyone, all my dear viewers today, this is my point of view. Now I would leave the platform open. I think what one thing before I leave the platform open for others, one thing I would like to say is a friend is a person who can counsel you in a good or a bad, in a problem or a happiness. So I would, in your immediate family, who would that be? Would be a good choice. Again, we are not here to debate yes or no. We are here to debate, or we are here to discuss what you think is your point of view. All right, so I'll leave the platform open. Anybody would like to share first? As we have a sports teacher, Deepak sir, I have always hated sports in my life, but I still used to I still used to be part of sports in schools and colleges, only because my sister used to encourage me, who was my best friend. And so I would leave the platform open. Anybody would like to start the discussion? Anyone, please? सर आई गेस ये जो स्टेटमेंट है कि पेरेंट्स कैन बी फ्रेंड्स ये पार्शियली सही है और पार्शियली गलत. Can you elaborate on that? Like, अगर हाँ तो या क्यों? सो बेसिकली एज मेरे घर में मैं नहीं कह सकता कि मेरे पेरेंट्स मेरे फ्रेंड्स हैं. सो बेसिकली उनका सिर्फ यही होता है कि तुम पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, फ्री टाइम है तब भी पढ़ लो. और ये मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ये मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि हाँ मेरे को कोई वो है प्रॉब्लम है या कुछ है. सो ऐसा मैंने देखा है कि मोस्टली घरों में जितने भी पेरेंट्स होते हैं, एटलीस्ट मेरे एरिया में मेरे जितने भी नोन दोस्त हैं, उन जितने भी पेरेंट्स हैं वो सब ऐसे हैं कि हाँ तुम पढ़ लो. और कोई भी मतलब ज्यादा वो नहीं है. सर मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे बेस्ट फ्रेंड तो सुनील सर ही है, क्योंकि एट्थ क्लास से ही इज बीन ग्रूमिंग अस, एंड उनके साथ काफी ज्यादा चीजें शेयर भी करते हैं. तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स फ्रेंड्स होते हैं, बट उनसे ज्यादा एक फ्रेंड एक अच्छा मेंटोर होता है. Correct. Oh yeah, The so thing true. is कि जैसे पेरेंट्स का आप कह रहे हैं, पेरेंट्स पे आप अभी जैसे फॉर करंट जनरेशन आपको गेम खेलनी है, पेरेंट्स हमेशा मना करेंगे. दिस इज बिकॉज उनके टाइम में नहीं थी वीडियो गेम्स. दे डोंट नो हाउ मच फन दे गिव टू अस. सो दे डोंट नो अबाउट द करंट थिंग्स. तो समटाइम्स वो कभी कभार नहीं कर पाते. I सो agree. I agree, Suyash and Bhuvan. कभी कभी as a parent मुझे कभी कभी feeling होती, when my son, as I said, is in 10th, 17 years. कभी कभी मुझे भी feeling होती है कि मैं उसको openly बोल नहीं सकता हूँ. So I would request कि आप कभी कभी parents के point of view से भी सोचिए. It's a brilliant point. I like what Ishika said. एक अच्छा friend एक mentor भी होता है. And this is a very very
strong statement I've seen in past 4 or 5 episodes we have conducted. Mentor, right? पर mentor में I always say कि कभी कभी आपको भी अपने पेरेंट्स की हेड पहननी चाहिए. I cannot be so open to my son, although जितना हो सके उतना मैं उसकी फ्रेंड बनने की कोशिश करता हूँ. But कहीं ना कहीं वो बापता आ जाती है मेरे में. बापता. It's a I'm sorry to say, it's a very funny Hindi word, but कहीं ना कहीं वो बापता मेरे में आ जाती है. So I'm not able to I feel that, and it's sad. But yeah, so Twinkle, yeah, what do you say? I have a question. आप अभी बोल रहे थे that from the parents perspective. So मैं ये question students के side से पूछना चाहूंगी कि as a parent अगर आपको ऐसा लगता है कि it becomes थोड़ा difficult for you to get there. So एक student को मतलब as an एक child को क्या ऐसा how should they reach out to parents? मैम फर्स्टली वी शुड नेवर लाई टू देम बिकॉज वो हमेशा हमारे भले के लिए कह रहे हैं. बट सेकेंडली कई बार मेरे को लगता है कि जनरेशन और एज गैप की वजह से दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. सो ऋषिका, वहां पे दे जो लैग अ आपने बिट. कहा ना, वो कहना बहुत आसान है बट करना काफी मुश्किल है. Exactly. Yes, ma'am. मेरा question तुषार सर से यही है कि कैसे करें, how do we initiate it, ऐसा क्या करें step wise या क्या कहे जिससे at least हम ice break कर पाए. See, I think the culture and the city matters. I am from Mumbai and I am from town side of Mumbai. मेरा culture हमेशा openly flamboyant, honest, upright और open रहा है, right? Yes, हमारे घर में भी rules थे मेरे grandfather के time पे. But as I said, मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई because मेरे पापा ने मुझे always comfortable feel कराया. मेरी second sister, as I said, मुझे always comfortable feel कराया. They always, Ishika said that, you should always be honest. And Suyash said that बोलना आसान है, करना नहीं. And I agree. Sir, I absolutely agree. Yes. And Rahul also agrees with me. sir, I'm saying my parents are very friendly with me. Yeah, even again, Rahul, we are trying to, as I said, okay, I am friendly with my son. He can open up and tell me, and he's a growing child. His metabolism is changing, his psychology is changing. He keeps discussing. We do men-to-men talks, he's more comfortable with me than her brother, her mother, I'm sorry. But kahin na kahin, as a parent, जैसे ममता होती है, again I would like to say, जैसे ममता होती है वैसे बापता आ जाती है. तो मैं उसको वही लैंग्वेज में नहीं समझा सकता जो probably a friend would explain me. So again, I would like to repeat what Ishika said. You need a mentor. You need a mentor who's your friend, or you need a friend who's your mentor. आपके immediate family में ऐसा कौन है? Parents necessary नहीं है. जैसे I would again say, मेरे लिए it's my sister, right? So Ishika, question to you. What do you think? Who would, आप ऑनेस्ट बोलते हो बट कहीं ना कहीं जैसे ही आप ऑनेस्ट होते हो यू गेट अगर कुछ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है यू गेट द फायर बैक यू गेट बैक फायर्स ऑन यू. सो इशिका, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? लेट्स स्टार्ट दैट वे. द फ्रेंड में राहुल है एंड मेंटोर कम फ्रेंड में सुनील सर है. Okay, so Rahul, I think is joining for the first time. Rahul, can you unmute yourself, please? I think we should let everyone speak once कि उनका friend कौन है. सर राहुल लास्ट टाइम भी थे. Sir, I joined last time also. I'm sorry. Rahul Indy. My bad. Okay, so before I go to Rahul, I'm sorry, we have two hands raised. Radhika, please speak, and then we'll allow Deepak sir to speak. Yeah, so I just wanted to put one point which I heard from one of the celebrity wife. So we all know Akshay Kumar, and her wife Twinkle Khanna once said that to make sure that my child makes me as one of their best friends, what I have done, like what Twinkle Khanna has done, is she made sure she talked about everything with their son, right? So her son is the elder between the two, and what she did was she talked about everything before that age came where he had to open up next. So before that, so before the teenage started, Twinkle Khanna did some good kind of conversation with his son about things which
about what you did in school, what's happening in your life. Would you like to discuss what kind of thinking process you have about your friends or about your relatives, and talking about things and making sure that he's getting more and more comfortable about talking with his mother about his deep down thoughts. That's I think where parents should start. And I really admire that way, that how Twinkle Khanna has made a good bond between her and her son and her daughter. So I think parents can start doing that. So Radhika, the question here is how. We need Yeah, to be little bit in how, if you can share some thoughts on that. yeah. So I think before that teenage comes in, we need to start making this, conversation, that parents at least take some time out from their busy schedule and start talking with, their child with any kind of topic. Let it be as silly as talking about cartoons, or let it be as silly as talking about, let's say any sports or something which is talking about TV shows. That's how they'll start building this rapport, because rapport formation is one thing which parents miss. And then they think that at any stage, whenever the child is wanting parents to talk with them, and they'll come to them. I don't think so that will happen any day. If you cannot break the ice, if you cannot make the rapport, that thing will not happen. So first thing is rapport building, and that should happen before the teenage, before teenage comes in. All right. So since childhood, Sir, we should start talking about the common topics and make a personal connect. Okay. Thank you, Radhika. Bhuvan. अब Sorry, मैं Deepak sir. बोलना Deepak. चाहूंगा। sir, जी सुनील sir. जैसे मुझे इनकी एक बहुत मेंटर जी की बात अच्छी लगी, राधिका जी की। उन्होंने कहा कि पेरेंट्स को ये वही बात हो गई कि आप जितने भी बड़े हो जाओ, आपके अंदर एक बच्चा रहेगा हमेशा। तो So आपको true. तो आपको हमेशा उस बच्चे को अपने अपने बच्चों के साथ कायम करने की जरूरत है, ताकि उनका दिन भी अच्छा रहे, आगे की चीजें भी अच्छी रहें। तो ये बात सही है, और ये बात टीनेज से पहले भी लागू होती है और टीनेज के बाद भी। क्योंकि टीनेज So में हम true. देखते हैं लोग बच्चे इरिटेट होते हैं। आप छोटी छोटी बात पे उनको टोंट मारो तो फिर भी इरिटेट हो जाते हैं। तो आप आराम से उनसे ऐसी आज आज यही पूछ लो कि आज चलो मेरे साथ डोरेमोन देख लो, मेरे साथ शिनचैन देख लो। ऐसी बातें भी कभी कभी करनी चाहिए, तो बच्चा बन के रहना चाहिए। और ऐसी बातें फ्रेंड्स के बीच ही होती हैं, तो इनडायरेक्टली पेरेंट्स फ्रेंड्स हो गए। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ। sir, So true. So sir, Sunil sir, if I summarize your topic is एज के हिसाब से आप उनके लेवल पे सोचना और एक्ट करना शुरू कीजिए. ओके, थैंक यू सुनील सर. दीपक बिल्कुल सर इज हाँ। वेटिंग फॉर सो sir, लॉन्ग. दीपक सर sir, I प्लीज. wanted सर to मैं say one thing. कंप्लीटली अग्री करता हूँ सुनील सर के साथ। मैं भी अपने बेटे के साथ दोस्त और उसका मेंटर, वो मेरा मेंटर है, मैं उससे इतना सीखता हूँ सर। सर बच्चा बन के उनके साथ बैठे, आप इतना सीखेंगे उनसे। बड़े होके बहुत दुनिया खींच लेती है, उनसे बहुत सीख सकते हैं हम सब। सर बच्चों की अपना अलग नजरिया होता है दुनिया को देखने का। वो हमसे ज्यादा समझदार है, हम उनसे बहुत चीजें सीख सकते हैं। स्पेशली व्हेन द जनरेशन इज चेंजिंग. मतलब मेरा बच्चा इज आई फील ही इज मच बेटर ऑन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देन मी. ओके, थैंक यू दीपक सर. राहुल, गो अहेड राहुल. Sir, Sunil sir had given the same advice to my parents and इसलिए मैं अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हूँ एंड हम कोई भी बात इजीली कर पाते हैं लाइक फ्रेंड्स। सर सुनील सर ने बिकॉज वो मेरे पेरेंट्स को मेरे पैदा होने से पहले से जानते थे, तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को भी यही एडवाइस दी थी। ओके, So, भुवन. Rahul, Sir, I would like to know personally that what was that one thing because of which you remember that you have started talking with your parents as considering them as a friend of yours. So, do you remember something which what they have done to make you comfortable? मैम इन क्लास 8 था एड क्रश ऑन अ गर्ल, सो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था एंड सुनील सर को भी बताया था। सो सुनील सर कन्विंस माय पेरेंट्स कि या ऑल दिस इज नॉर्मल एंड उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत That's a really good thing because they tried to understand your situation as well, and they reacted in a way that it was good for like both of you. So I think that's really great. क्योंकि Bhuvan, I think you also इस want to say something. हाँ यस मैम भुवन मैम बेटा मेरे बोल। को पहले एक चीज ऐड करनी थी कि
मेरे ख्याल से कि पेरेंट्स जब भी हो सकता, मतलब एज एन, अगर आप अपने बच्चे को थोड़ा सा उसे मतलब हर छोटी छोटी चीज पे टोकना या डांटना बंद कर दो, तो मे बी इट इज अ ग्रेट फैक्टर जो कि आपको हेल्प करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हूँ, मम्मी या पापा, उनको मैं बता रहा हूँ आज मेरे स्कूल में क्या हुआ मेरे साथ। सो मैं बोलता हूँ कि आज मैं एक कॉपी ले जाना भूल गया, मैम ने मेरे को बाहर खड़ा कर दिया क्लास के। सो आपको क्या लगता है कि एक टिपिकल पेरेंट क्या रिएक्ट करेगा इससे, कि अच्छा बेटा कोई बात नहीं, या फिर ये कैसे हुआ और डांटे लग जाएंगे? सो यही मेरे को एक चीज बोलनी है कि मे बी अगर छोटी छोटी चीजों पे या थोड़ा बहुत इग्नोर करना, मतलब इग्नोर इन द सेंस टोटली नहीं, थोड़ा थोड़ा इग्नोर करना और छोटी छोटी बातों पे ना डांटना, सो ये एक फैक्टर आगे चल के बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आई थिंक और ये सब एक जी ये सब एक स्कूल लाइफ है। ये अगर आप एक बार कॉपी ले जाना भूल गए, आप एक बार बाहर क्लास के खड़े हो गए, तो उसको एंजॉय करो। ये नहीं कि आप पूरे पूरे साल लेके नहीं जा रहे, आप गलती से ही भूल सकते हैं, या कोई बच्चा जानबूझ के डेस्क में रख के वापस नहीं आ जाएगा। ये सब स्कूल लाइफ है। अपने दोस्तों के साथ बाहर अगर आप खड़े हैं तो थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर सकते हैं, पर इसको एक हैबिट ना बनाएं। ये एक ये आगे जाके बातें याद आती हैं। तो ये आई यस मैम। आई थिंक भुवन ने अभी जो पॉइंट बोला उससे मुझे एक और पॉइंट दिमाग में आया कि और ये दिस इज ओपन फॉर डिस्कशन, आई वुड लाइक एवरीवन टू आंसर दिस क्वेश्चन। एक पेरेंट को एक पेरेंट पहले होना चाहिए या एक दोस्त पहले होना चाहिए? दोस्त पहले या पेरेंट बाद में? ये रोल स्विच कैसे करे और कब करे? जैसे भी भुवन ने बोला कि आई लेट थिंक नाइट डांट पड़ी, हाउ हाउ ये कहाँ कैसे डिसाइड करे कि पहले दोस्त या फिर पेरेंट, या पहले पेरेंट मैम या जब तक आपको लग रहा है कि हाँ वो अभी गलत, मतलब ऐसा जब इन लॉन्ग रन ज्यादा बुरा नहीं हो सकता, तब तक एक दोस्त बन के, और जब आपको आगे लग रहा है कि हाँ आगे चल के इसके कुछ साइड इफेक्ट्स या फिर कुछ गलत इफेक्ट्स हो सकते हैं इस पे, तब तक उस टाइम पर पेरेंट। दैट्स अ मैम वेरी मैं भी ऐड करना चाहूंगी कि जी इट्स बिल्कुल। लाइक 80%, अगर परसेंटेज वाइज बताऊं तो 70% फ्रेंड, 30% पेरेंट। Yeah, that's again a good ratio. Anyone else? मैं कपिल सबसे ही गुप्ता, जानना कपिल चाहूंगी। कपिल बेटा बोलना है, बोल बोल बेटा बोल। मैम एक्चुअली हमें सिचुएशन के ऊपर पेरेंट्स को स्विच करना चाहिए, लाइक वो पेरेंट्स बन के रहे या फिर लाइक दोस्त बन के रहे। मैम जैसे भुवन ने बोला कि अगर कुछ सिचुएशन ऐसी है कि आगे जाके कुछ बुरा नहीं हो सकता तो दोस्त बन के ही रहना ठीक है मैम, नहीं तो फिर लाइक बच्चों पे भी गलत इफेक्ट पड़ता है और उनको भी मेंटल स्ट्रेस होता है। सॉरी, मैं नहीं समझा। सिचुएशन आप ये बोल रहे हो कपिल कि सिचुएशन के बेसिस पे पेरेंट्स शुड बी अ फ्रेंड और अ पेरेंट? यस सर, हु विल डिसाइड दैट सिचुएशन कपिल? द पेरेंट्स। क्योंकि पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिचुएशन पेरेंट बनने की है, पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वो सिचुएशन फ्रेंड बनने की है, पर चिल्ड्रन के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वाइस वर्सा है। तो ये कौन डिसाइड करेगा? सर कैन यू गिव एन एग्जांपल प्लीज? सर जी मैं कुछ कहना सिचुएशन का चाहता हूँ सर जी। एग्जांपल। सर जी, दीपक जी बोलिए। सर एक दोस्त जो सच्चा होता है ना, वो आपके पेरेंट्स से कम ना होता है। वो भी आपके पेरेंट्स जितना ही अच्छा बोलेंगे आपको, सही पेरेंट्स बात है। जितना ही अच्छी राह दिखाएंगे, एक अच्छा दोस्त होगा। तो यानी कि तुम पेरेंट और दोस्त साथ में बन सकते हो। और जैसे सर हमारी दीपक जी से बहुत सालों की दोस्ती है, कम से कम 20-23 साल की दोस्ती है। आज भी ये जो बातें अपने बहुत अच्छी बात है, खुदा का कहर है, सबके पेरेंट्स अभी अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, आगे ही सब अच्छे रहें। तो दीपक जी दलाल साहब जो हमें जो जो चीजें अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते, या अभी तक भी नहीं बताते, या अभी अपनी वाइफ को भी नहीं बताते, वो आके मुझे बताते। ये ऐसी हमारी फ्रेंडशिप है। हम भी एक दूसरे के पेरेंट टाइप ही हो गए, आगे आगे बातें करते हैं हम। इसको तो शादी के बाद भी प्रपोजल आते हैं, ये हमें मुझे बता, ऐसी ऐसी सुनील सर हमारी को मैं अपना नॉट। बाप ही समझता हूँ। I think there's a great relationship. Great relationship. Okay, we have Syed and we also have Amir. Syed, Amir, welcome. Any आप क्या बोलना चाहते हो? Syed जी. Syed जी. Good evening, everybody. Good evening. Right now I'm sitting with my eldest son actually. वो मेरे साथ ही बैठा हुआ है ताकि मैं इस वेबिनार को अच्छे से हम दोनों ही सुन सकें। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि यू शुड बिल्ड अप योर, कहता है ना कि एक बाप को या अपने पेरेंट्स को उन फेथ सबसे पहले बच्चों पर आना उनके ऊपर होना चाहिए, ताकि वो आपको फ्रेंड कब समझेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप उसके ऊपर फेथ करेंगे, अगर फेथ नहीं है तो मेरे ख्याल से कभी भी बच्चा अपने पेरेंट्स के ऊपर कभी भी वो फ्रेंड नहीं बन पाएगा। ये मेरे थॉट है एक्चुअली में। फर्स्ट ऑफ ऑल फेथ होना चाहिए, आप उसको इस तरह से लें और
किसी ने कहा भी था अभी जस्ट के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली ये कि आपको कब पेरेंट बनना है और कब उसको फ्रेंड की तरह आप उसको बात करें। तो डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि आप किस तरह से उसको टैकल करते हैं। उसी तरह से फिर अपना आपका जो भी चाइल्ड है वो आपके ऊपर फेथ करेगा और फिर आपको हर चीज वो आके बताएगा। मेरे हिसाब से फेथ इज द फर्स्ट पॉइंट एज पर माय नॉलेज एक्चुअली। Oh, yeah, I agree. I agree. But there's a give and take relationship, Sergi. I think faith जितना आप चाहते हो कि आपका बच्चा आप में फेथ गेन करे, उतना ही आपका बच्चा भी शायद चाहता होगा कि वो आप उसमें फेथ गेन करे। मतलब एक दूसरे को ट्रस्ट करना या एक दूसरे में फेथ गेन करना, ये दोनों माँ बाप और बच्चों का काम है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। Amir ji is agreeing to what we are saying. So Amir ji, sir. Sorry, okay, Ishika, 1 second. Amir, I would like to speak. I would like Mr. Amir to speak. Mr. Amir KK. Okay, Mr. Vineet Jha. Okay, Amir ji, सर, बोलिए। Amir ji, सर, बोलिए। हमारे साथ मिस्टर विनीत झा भी आज, ये डोमेस्टिक लेवल क्रिकेट प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छा खेलते हैं। I'm so proud to see you there. Vineet Jha, I'll speak to you, Vineet sir. पर Amir sir बहुत मैसेज डाल रहे हैं. I want him to speak. Amir ji, please बोलिए. Do you agree with Syed sir and what I said? Yes, yes. So are you a parent or a student or a teacher? What are you? Student. You're a student, so you agree with us what you're saying. All right, so I'm so happy. Yeah, I'm Vineet's teammate. You're Vineet's teammate. Okay, Vineet sir. Vineet, please come online. I can't see him. Vineet ji, you are a sportsman. Okay, his mic is having an issue. All right, so Vineet ji, you can put your comment. I will read on your behalf. But we are so proud to have you, and we wish that once you very soon you play for a national level, and we all can say that okay, you were part of our discussion once upon a time. But all the best, Vineet ji. Keep putting the message. मैं आपके बिहाफ पे रीड करूंगा। यस दीपक जी, आपने रेज हैंड किया है, बोलिए दीपक जी। ओके, विल मूव टू इशिका। इशिका, आप कुछ बोलना चाहते हैं? यस सर। सर मैं एक्चुअली कहना चाहती थी कि काफी टाइम से सिर्फ हम बच्चे ही बोले जा रहे हैं, सो आई वुड लाइक टू हियर अ पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। आई वुड लाइक टू हियर मिसेस कनानी, बिकॉज़ लास्ट टाइम इन्होंने काफी अच्छे पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड करे थे। I was going to come to Mrs. Kanani. Ma'am, welcome back. We are so happy to see you again, and thank you for joining us. Mrs. Kanani, now the platform is yours. Okay, so I think she'll join. In the meantime, I see a new participant, Dipti Shetty. So Dipti, would you like to speak? Would you like to share your point of view? Yes, sir. Good evening to one and all present. Actually, it's a very good session. I just got to know through the website, Facebook page, and I thought it's a very interesting topic because even I have a daughter, and as sir said, faith is actually, you know, it's just I have learned from my parents, the upbringing from my parents. It is a relationship is between the faith. It's just a cordial relationship. It's a very beautiful relationship actually, as you rightly said, sir. It's not said that only parent and child has to be there. Your sister also is, she is a mentor, rightly said by one of our, I think so Ishika said, rightly said by her. um, Actually every person, each and every one with whom we are associated, I take it like this, sir, with everybody with whom we are associated, we actually learn from something. And I mean, we learn a lot of things from everybody. And the trust is the base of everything, the faith and trust. So, and the patience, actually, in any relation, the patience is more required, because patience is such a thing that, if you have the patience to learn from your child, you are actually, you have won the cricket over there only. Your half the thing is you have conquered the battle. You can't be So like, true. okay, I know everything and everything. It is not So true. possible. So It's true. a two-way process of any relationship. Let it be a father and a mother child, or a mother and a child, or siblings, or whatever it is, whether a teacher and a student relationship. It is actually the faith who has a base and a patience for everything. So that's what I wanted to say, and it's मैं very good to इसमें have थोड़ा everybody. Deepti ma'am, I have a question. Okay, Yeah. so
what you said made so much of sense, but I have a question that how difficult it is for a parent to manage time, work, and also give, because if you want to extend, be a parent and also be friends, you need a lot of time for your child. How, Very from true. parents perspective, from a parent's perspective, how difficult is it to multitask at this level when you it is, because it requires a lot of emotional investment and psychological investment as well. So Yeah. how does one manage all of the things? Actually, ma'am, we have learned like it's like the word impossible. In that impossible, I am possible. So actually, I as an individual, lot of things had come around, like uh, right from her birth to now, and lot of things are there. But you have to, like, if you are telling ki, yes, it is possible, you can do it. So the sky is your limit, ma'am. So you can do anything and everything if you have a faith and trust, and the confidence that you can do it, and you will do it. And nothing is impossible, I feel that. So that is how we have to manage our time. So time management in every sense, like, that is very important. So true. So true. I agree. Dipti ma'am, thank you so much for joining. Keep joining every Friday. We are going to have Yeah, this sure. session. And also, please get more parents, because we have a lot of students and our students want to hear the parents. Welcome back, Mrs. Kanani. We'll come back to you. But just one, I would like Kapil to speak. Kapil, last time बहुत अच्छे point बोले थे. Before we move to Mrs. Kanani, Kapil, you there, right? Yes, sir. So बोलिए, please बोलिए. सर आखिर मेरे वही पॉइंट थे कि फ्रेंड्स को एक्चुअली मतलब एक सिचुएशन देख के होना चाहिए फ्रेंड्स, और हाँ लाइक पेरेंट्स का रोल कब निभाना चाहिए और एक फ्रेंड का रोल कब निभाना चाहिए. सो ये कौन डिसाइड करेगा? कपिल, माय क्वेश्चन इज अगेन द सेम. ये कौन डिसाइड करेगा कि पेरेंट को कभी पेरेंट का रोल निभाना चाहिए और कभी स्टूडेंट का रोल निभाना चाहिए? ये आई थिंक पेंडिंग रहेगा जवाब, सवाल. व्हेन वुड अ पेरेंट decide, who will decide that a parent should be a friend at that time or a parent should be a parent at that time? I think ये सवाल Sir, डेफिनेटली पेंडिंग रहेगा. ये सर कोई डिसाइड नहीं कर सकता है. दीपक जी बोलिए सर. सर पापा और बेटा असली दोस्त तब बनते हैं जब बेटा 18 साल का हो और फिर साथ में एक ड्रिंक ले. सर मेच्योरिटी आती है इससे. विनीत जी ने बहुत सिमिलर पॉइंट डाला. My son and I share a very good bond. Once I had a major breakdown because I caught him smoking a cigarette. Then I couldn't scold him, but it was a growing age, and you can't contain teens. So from that day on, I smoke with him. Okay, so to add to this, Vinit ji, of course, my son is 17, but एक दिन उसने मुझे पूछा, Dad, आप cigarette पीते हो, you drink. What if I drink and I smoke? I say, you start with me. You start with me. That's what I said. बस ये 3 शब्द थे या 4 शब्द थे, and तब से I know that he will start with me, and then of course he would know his limit. तो कभी कभार बच्चों को इंडिपेंडेंसी भी देना जरूरी है. Okay, so we now one last person. Miss Sakshi has not been talking at all. Miss Sakshi, can I allow you to speak, please? Okay, so to summarize, age matters. Age के हिसाब से I think starting में ही किसी ने बोला था कि age के हिसाब से हमें अपने बच्चों के साथ accustomed होना है, flexible होना है, age के हिसाब से उनके साथ behave करना है. I think सुनील सर ने बोला था. All right, so Mrs. Kanani, eagerly waiting to hear you. Welcome back. How are you? Hello. Hello. Yes. Finally. Yes. ओ मैम, हम तो तरस गए मैम आपकी आवाज सुनने के. Yes, truly. Ma'am, Thank you you. are an Thank you very inspiration much for us. for inviting me, and everyone, good evening. And sorry for the No inconvenience. problem, ma'am. No problem. A very good evening to you. Thank you for Ishika also for inviting, and many other students also were interested. Actually, my views are that here the part is played by the parents. To be friendly, parents have to play the main part. Parents have always, means they have to be very, very, very patient with the children over here. Now, when child is coming with some problem, we have to listen it first with the patience.
And after that, you know what, directly something, if the child has done something wrong, you can't directly scold the child. You understand him and show him how he or she would have tackled the problem. Now many times it is that even parents, what they are working, and in my case I have observed this many times. I am coming from the job, and my daughter, if she's having some problems, or whether she's having some work, she will start immediately seeing me. She will start immediately, whether hunger problem, whether other problems. I That time I immediately just say some few words in anger, that at least let me have some rest. And after that immediately I realize also that this was not good from me, because where she will go with the expectations, if I don't satisfy her expectations, then here the matter will come with the friends, with the other connections. So I feel that parents have to be very very patient, and parents can be friendly. 100 times parents can be friendly. It depends totally on the behavior. Another thing, coming to the side of child. Now at a low age, at the when the child is small, means child can be friendly with the parent. But now when the age problem, like others discussed, when age is coming, that here some problem comes, that many times what happens, we feel that only the thing is only parents can see, we are on the top, we can see that what is good and bad for our child. But children know, they are that is the age. Teenager is such age where they cannot understand. Many cannot, I will not blame everyone, okay, they cannot understand. But sometimes what happens, children are not able to realize whether what is good or what is bad for them. That time now parents have to be little like parenting type. Otherwise they can even be friendly, and they can explain them what is good for them and what is bad for them. So here I feel it is totally depending on the behavior of the parent, that how they should act according to the situation, according to the age, how they should tackle. And हर बार बच्चे को डांटना जरूरी नहीं है. आप जैसे ही आप डांटना शुरू करोगे, बच्चे दूर भागेंगे आपसे. Instead, ask them what was the case, what was the mistake, and tell them, if parents would have been in their shoes, how they would have tackled. Because age, there is a distance of age between the parent and the child. So parents have to be here like a kid, and they have to explain them what should be the case and how they could have tackled the situation. These are the my views. If anybody can correct me somewhere, then actually I am always friendly with my daughter. Whatever happens, I scold. We have fights also, like friends, how they fight, we have fights also, we have debates also. On some points we have debates, okay, this is right, this is wrong. So depends how you tackle your child also. Every time is not that children are wrong. Many time parents also are wrong. Their behavior is not proper. Maybe they are bossy type. Then here you cannot expect your child to be friendly. And many times it is the case that parents are very friendly, but children knows, they start hiding, or they in the fear they don't discuss every matter with the parent. So here the distance comes. Okay, great. I think this is a quite a good summary. Uh, Very well said, ma'am. Sakshi, I would, Sakshi, yeah, I Sakshi would, wanted to hear Karani ma'am. Sakshi, what do you say? I would like to answer Sakshi's question. Special children को कैसे handle करें? So if we talk from psychological perspective, हमें उनके साथ, क्योंकि वो दुनिया बहुत अलग तरीके से देखते हैं. हम as an individual with normal IQ, हम जैसे दुनिया को देखते हैं, and the way they see the world, it's very different. So उनके लिए दोस्त बनना सबसे पहले बहुत जरूरी है. You have to be very humble with them, very polite with them. Take care of them with a lot of sensitivity. You have to be very empathetic, and sensitivity के साथ उनके साथ deal करना पड़ता है. So I hope, Sakshi, that I answered your question. I think Twinkle, this is more towards the topic what we want to discuss for next week. Okay, okay. I have taken down all the topic. तुषार सर, जब मैं और सुयश सिर्फ जब आपकी सेकंड क्लास में आए थे, जी जब हम दोनों पहली बार आए थे, तब की बातें मुझे अब याद आ रही हैं. आपके साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत इन 4 थैंक क्लासों यू में. थैंक यू सर, थैंक यू. तब बट हमें राधिका ये जी शो की बहुत वीडियो ही ऑन भी थी.
सर जी, हमें ये शो बहुत डिफरेंट लेवल पे लैंड कर रहे हैं सर, बिकॉज आई थिंक इंडिया में कभी ऐसा नहीं हुआ है जहां पे पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स साथ में एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत ही डिसेंसी और डिसिप्लिन से बात कर रहे हैं। सो हमें ये सर बहुत डिफरेंट पीटीएम में लेवल। होता है ना, सर स्कूल्स की पीटीएम में होता है ना, तीनों साथ होते हैं कहाँ पे? स्कूल्स की पीटीएम में। हाँ, मैं पीटीएम का एक फोटो दूंगा आपको सर। टीचर वो साइड बैठा है, पेरेंट ये साइड, और बच्चा पीछे बैठा है मुंह नीचे लटका के। अरे सर आप कौन से स्कूल में गए हो हमें पता नहीं सुनील सर, मगर मैंने ये बहुत देखा है। बट Yeah, एनीवे, excuse me, sir. That सर time teachers are always saying bad points about the children many times, not आई नो, always, but many times. And children आई are नो, just listening. They are not allowed to speak anything. They cannot openly speak. And this is the biggest platform and the great thing that children are able to speak. Whatever थैंक यू, their views are there, they are able to speak frankly. थैंक यू मिसेस यस और सर चारानी। आजकल तो कुछ सर टीचर्स होती हैं, जो टीचर्स भी होते हैं जो अपने बच्चों के डाउट क्लियर ही नहीं करते, उनकी आवाज को दबा देते हैं। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ बच्चे खुद बोल रहे हैं और इनको कॉन्फिडेंस आ रहा है और आगे जाके क्लासेस में भी बोलेंगे। एब्सोल्युटली, और तो एब्सोल्युटली। मेरे बच्चे जैसे हैं, ये सारे तो ये क्लासेस में चुप ही नहीं होते। मैंने इनको शुरू से सिखाया है, डाउट पूछो तभी सीखोगे। एब्सोल्युटली, जब तक आप बोलोगे नहीं तभी हमें पता कैसे चलेगा प्रॉब्लम क्या है। सर और हाँ मैं आई थिंक ये जो मैंने अभी बोला स्टेटमेंट, ये हमारे टॉपिक के साथ बहुत बहुत वैलिड है आज। जब तक हम उनको कंफर्टेबल नहीं करेंगे कि आप बोलो या पूछो, तब तक विल बी नेवर, हमें पता ही नहीं चलेगा कि उनको प्रॉब्लम क्या है एक दूसरे को। पेरेंट्स बोलो, टीचर्स बोलो, स्टूडेंट्स बोलो, चिल्ड्रन बोलो। तो ओके, राहुल, राहुल आपको कुछ बोलना है राहुल? सर आई वांटेड टू नो कि आपने कहा कि अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप इसको करेंगे पब्लिश, तो सर उसका लिंक कहाँ से मिल पाएगा सो दैट वी कैन आल्सो हेल्प टू स्प्रेड दिस यस सर, मैसेज? क्या आप अपनी वेबसाइट शेयर कर सकते हैं? श्योर श्योर श्योर। हमें और एक मेरा टारगेट था कि मैं एटलीस्ट 4 एपिसोड्स के बाद 5th एपिसोड में हम काफी सारी चीजें आपसे भी हेल्प लेंगे, और जितना हो सके हम ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमें ये लाइव करना है। बिकॉज ये शो के बाद हम चुप नहीं बैठते, ये शो के बाद हम शांत नहीं बैठते, ये शो के बाद हम इसका पूरा एनालिसिस करते हैं। और इसमें आपके इनपुट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि हमें हेल्प करेगा दूसरे लोगों को अंडरस्टैंड करने को। हमारे टॉपिक्स जो है, आज तक मैंने अर्नब गोस्वामी के प्लेटफॉर्म पे देखा नहीं है हमारे जो टॉपिक्स है वो। तो ऐसे अरे सर टॉपिक्स, अर्नब गोस्वामी तो अलग आइटम है। नहीं नहीं हमें वो बनना भी नहीं है। पर यस हमने सर, ऐसे कोई न्यूज चैनल पे या प्लेटफॉर्म पे ऐसे टॉपिक्स नहीं देखे सुनील जी। यस तो सर, आप ऐसा है, कहीं पे भी कानानी नहीं है। मैम यस है। सर। और सर आज वैसे फ्राइडे को हो गई, वैसे कल होनी थी। नहीं सर, उसमें हमें कुछ रिक्वेस्ट आई थी पेरेंट्स और टीचर्स से कि नॉर्मली सैटरडेज को जब हम पेरेंट्स बोलते हैं ना, तो सबसे ज्यादा मदर्स ज्वाइन होती है। और यस मदर्स वर्किंग मदर्स को टाइम नहीं मिलता है सैटरडे को, बिकॉज उन्हें लिमिटेड टाइम मिलता है अपने फैमिली के साथ स्पेंड करने को, इसलिए ऑल्सो हमने सर वही फ्राइडे को सैटरडेज को शिफ्ट किया है। कोचिंग भी बहुत ज्यादा होती है, सो उसकी वजह से बच्चे भी ज्वाइन नहीं कर पाते। यस सर, हमें करेक्ट। मेट्रो से ज्वाइन करना पड़ता है। लकीली लास्ट सैटरडे को तो हमारी क्लास कोचिंग नहीं थी, इसलिए हमने ज्वाइन कर लिया, नहीं तो हमारी कल और है। सर सर मैं तो उससे मेट्रो लास्ट से करता हूँ सैटरडे सैटरडे तो को। मैंने अपनी कोचिंग ही मतलब बंद कर दी थी। मैंने कहा हम पहले यहाँ आएंगे फिर करेंगे कोचिंग। वाओ। सुनील सर आपने इसलिए नहीं ली थी पिछले वीक? हाँ इसलिए नहीं ली सुनील थी। सर अरे सच बोलिए, सर आपके बच्चे लाइन पे, आप जो बोलेंगे पकड़े जाएंगे भाई साहब। नहीं बट यार अभी एनीवेज, तो आई एम कर सो एंजॉयिंग दिस सेशन, मुझे बहुत मजा आ रही है। हम ये सेशन My, बहुत अलग अलग तरीके से भी लेंगे। हम इस, जी जी कारानी मैडम बोलिए। my classes are going on till 10 o'clock and I have to break every time for the meeting. 8:30 I have to leave the children and come. I'm having 10th and 12th standard students in that batch. So Friday is fine, no? Friday is fine for everyone, right? Every सर मे time बी नेक्स्ट वीक थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। I'm okay with all the timings, no problem. No, we can't. हमें एक सुयश और भुवन, हमें एक स्टैंडर्ड टाइम रखना पड़ेगा। जैसे हमें हमने तो कहा हाँ कि सर, भैया, हमें तो ज्यादा अच्छा लगा, हमारा तुषार एक सर दिन आपसे मिलने का कम हो गया। जी राहुल, हम जी एक दिन राहुल। जल्दी मिल लिए सर आई आपसे। थिंक सर वीक में 2 बार कर लेना चाहिए बिकॉज सर इस पे बहुत अच्छी डिस्कशन होती है एंड हाँ यस सर। ऑल सर, पेरेंट्स अगर नहीं आप नहीं, बेनिफिट। पक्का फ्रीक्वेंसी पक्का बढ़ा दें। पक्का पक्का, वी टेक दिस एज अरे अ फीडबैक। बच्चों तुम्हारे पेपर आ रहे हैं, थोड़ा आराम से भावनाओं में मत भाओ। सर 1 घंटे में कुछ नहीं होता सर, खेलने के टाइम पे हम कर लेंगे सर, टाइम टेबल चेंज कर लेंगे, कोई नहीं। अच्छा, वाह इसमें वाह हमारे वाह। YouTube चैनल का सब्सक्राइब करने को डाला है राधिका जी ने, मिसेस मेंटोर ने। तो आप प्लीज उनको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर सर लेकिन कीजिए। सर एक बार तो सर प्लीज, हम फिर भी सर राधिका मैम की सर शक्ल देखना चाहेंगे सर।
डन। नेक्स्ट वीक हम हम आपकी भी शक्ल देखेंगे और राधिका मैम की भी शक्ल देखेंगे। आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट। शक्ल देखेंगे। आप भुवन अपनी जी शक्ल थम दिखाइए, जाइए, हम कोई आपको बात हमारी नहीं शक्ल दिखी आप दिखाएं। शक्ल भुवन जी, थम जाइए। सर ये भुवन में बहुत मिर्ची लग रही है। नहीं सर, हम मिर्ची पे पानी डालने को ही बैठे यहाँ पे। भुवन का अकेले का फॉल्ट नहीं, हम सब में मिर्ची है बचपन से। मुझे पहली बार बोलने का मौका मिल रहा है। ट्रस्ट मी, मुझे कोई पूछता आप इतना क्यों बोलते हो, मैं बोलता हूँ भाई मेरे को घर पे बोलने का मौका मिलता नहीं है, मैं अरे सर शादीशुदा हूँ, इसलिए ना, यहाँ अरे बोलता बिल्कुल हूँ। सर, हम दोनों एक ही नाव में। इसलिए सुनील सर जी मैं आपको अपनी मिलना क्लास है में पक्का? बच्चों को बोलता हूँ, जो अगर तुम हो घर पे सका, बोलो अगर अपने इंशाल्लाह दोस्तों के सब साथ कुछ बोलो, ठीक यही रहा, बोलो। इंशाल्लाह अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर हम बहुत ही हिट शो कर सके, तो हम डेफिनेटली प्लान करेंगे कि हम फेस टू फेस एक शो करें, और हम आपको मैक्सिमम लोगों को बुलाने की कोशिश करेंगे। हमारे वेन्यू पे, हमारे ऑफिस में हमारा स्टूडियो सेटअप है, वहां पे हम करेंगे इंशाल्लाह। बस सब ठीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, सॉरी हमें ये कट डाउन करना पड़ेगा। अच्छी फीडबैक आई आज। 2 टाइम हफ्ते में शो करना है, यस हम करेंगे, थोड़ा टाइम दीजिए। लेट अस गेट मोर ऑडियंस, हमें और ऑडियंस चाहिए। सेकेंडली आज अगले हफ्ते के टॉपिक्स कुछ मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, हमें टॉपिक क्लोज करना है गाइस। पहला टॉपिक है सुयश से वीडियो गेमिंग होना चाहिए कि नहीं। साक्षी जी का है स्पेशल चिल्ड्रन को कैसे हैंडल करना है। और सर विनीत जी आगे का है क्लासेस कौन कौन से दिन होंगी वो कैसे पता चलेगा? फ्राइडेज को, फिलहाल हम फ्राइडे को करेंगे सुनील जी, अदरवाइज हम आपको मैसेज और ईमेल भेजते रहेंगे। सर एक बार आप अपनी वेबसाइट बता दीजिए प्लीज, क्योंकि आपने कहा था आप वेबसाइट पे पोस्ट करेंगे जी एक मिनट। लास्ट वीक। सर वैसे अभी आपने पोस्ट करता क्या हूँ है? जी, अभी पोस्ट करता हूँ, एक मिनट। मैसेज में डालता हूँ मैं। सर कोई अगली बार का और धुआंधार वो देखिएगा टॉपिक, सर ताकि हमें अच्छी धुआं हो। नहीं करना है, हमें रोशनी करनी है। सुनील जी आप तो सर फुल बट रेडी हो, अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक हो तो हमारे को भी काफी इंटरेस्ट आता है। हाँ जी सर, जैसे सर पिछली क्लास आई गेस मेरे हिसाब से ऐसा है कि पिछली वाली क्लास जो थी दैट वाज मोर फन फॉर मी, क्योंकि उसमें मेरे को ज्यादा पता था कि हाँ मेरे को मतलब मैं रिलेट कर पा रहा था पर्सनली। पर मेरे लिए भी यस पिछली सर, वाली टाइम क्लास टेबल ज्यादा तो फन थी। तो अगले हफ्ते क्या टॉपिक करना है आप बताइए, मैंने तो कहा था आपको डालने को टॉपिक। सर सर कई बार हम सर कई कन्वर्सेशंस होती है हमारे पेरेंट्स के साथ, या नहीं कर पाते हम बिकॉज इट गेट्स वेरी ऑकवर्ड। सर सर मतलब मेरे मेरी ख्याल फैमिली से में ऐसा सर कई ये बार होनी थोड़ा चाहिए कम सर। होता है, बिकॉज मेरे पेरेंट्स हैं फ्रेंडली, बट मेरे कई फ्रेंड्स को प्रॉब्लम आती है। सर उस सब के बारे में कर सकते हैं, द ऑकवर्ड कन्वर्सेशंस वगैरह। सर सर नेक्स्ट अब्रॉड की स्टडीज के लिए कर सकते हैं। जी किस पे डिस्कशन करना है? अब्रॉड स्टडीज। अब्रॉड स्टडीज पे कर लेते हैं, इसका बहुत बड़ा आगे का ड्रीम भी है सर सुयश शर्मा का जाने का। श्योर सर हम या फिर एक्सपर्ट हम ला इस पे भी सकते कर हैं। सकते हैं कि आप हमें सब्जेक्ट बताइए, हम आपके लिए इंडस्ट्री के बेस्ट एक्सपर्ट ला सकते हैं। लेट मी टेल यू। तो अगर सर हमारे इकोनॉमिक्स को ऑनर्स। स्टेम करियर या फिर इको में जाना हो तो ओके बहुत टॉपिक्स आ रहे हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम हमें क्लोज करना है ये सर एक सेगमेंट। लास्ट मेरा सर प्लीज सर। हाँ जी। सर मे बी इस पे कर सकते हैं कि एग्जाम्स ऑनलाइन होने चाहिए कि ऑफलाइन। नहीं भुवन, ये हो आपने चुका। ये बहुत डिस्कशन किया है, हम इस ये पे हो नहीं चुका। सपोर्ट करेंगे आपको। तुषार जी को पता है Exam हमारी पहली is only क्लास में offline. नहीं भुवन, ये हम डिस्कस भुवन नहीं करेंगे, आपको करना हमारा है तो आप मुझे। ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है भुवन। भुवन मैं बेटा आने मैं वाली एक्चुअली मैं और आ नहीं पाया था मैं उस और क्लास में। सुयश शर्मा Offline only. पहले ही एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं, यहाँ नहीं यस, मानते मैंने लोग। और सुनील सर ने एक साथ कर दिया था। ओके गाइस, एवरीवन अगेन मुझे भूख लगी है, मैं खाना है। सो आई जस्ट वांट टू से एवरीवन, अगले हफ्ते का टॉपिक स्टडी अब्रॉड पे करते हैं, राइट? हम आपको एडुकेट यस सर। करेंगे, आपको जो भी क्वेश्चन हो आप पूछिए, वी आर मोर देन ओपन। हमारे पास और भी काफी सारे अच्छे टॉपिक्स है जहां पे करियर काउंसलिंग कैन बी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सुनील जी और कानानी मैडम मुझसे अग्री करेंगे। काउंसलिंग हमें पता ही नहीं है, हम इतने कंफ्यूज्ड है बिकॉज हम हाफ ऑफ द टाइम एज अ चाइल्ड हम इन्फ्लुएंसर्स के इतने इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं कि हम कभी कभी वो फील्ड में चले जाते हैं जो हमारी फील्ड होती ही नहीं है, हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो अगले हफ्ते स्टडी अब्रॉड पे करते हैं। आई प्रॉमिस यू आई विल गेट अ वेरी गुड मेंटोर फॉर यू ऑल, जिसे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो। सो मैं आपके साथ अगले हफ्ते स्टडी अब्रॉड पे, आप अपने सवाल रेडी रखिए। मैंने मेरी वेबसाइट ऑलरेडी शेयर की है। दिस इज वन ऑफ आवर वेबसाइट।
हमारी मास्टर वेबसाइट वेरी सुन लॉन्च होगी। जैसे मैंने कहा यूट्यूब चैनल है हमारी, आप यूट्यूब पे भी प्लीज लाइक शेयर और फॉरवर्ड कीजिए। आप हमारे वीडियोस सुनिए, उसमें स्टडी अब्रॉड, स्टडी एमबीबीएस के रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस है। सो अगले हफ्ते का टॉपिक वी क्लोज स्टडी अब्रॉड। एवरीबडी अग्री? स्टडी अब्रॉड? Yes, sir. It's a good topic. Yes, थैंक यू sir. इशिका। Great, great. कारानी मैडम, सुनील सर, आप तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो। डन है जी, डन है, Yes, बिल्कुल। yes, sir. We agree with you, and that will Done. be the prime topic Deepti for ma'am, the career. Deepti ma'am is Done. also here. I think Deepti ma'am, you also like the topic for the next session. Yeah. It's a good topic, ma'am. Perfect, perfect. Also, before I keep quiet, before I zip my mouth and I hand over to Twinkle to summarize the show, please share this link, register करवाइए, get more people, more parents। यहाँ पे students आके हमें kill कर रहे हैं, हमें parents और teachers ज्यादा चाहिए, especially parents। प्लीज इसको शेयर कीजिए, get people। ये बहुत अलग लेवल का हम शो इसको अलग प्लेटफॉर्म पे करेंगे। ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस यू, हर बंदा जो ये शो पे आएगा हमें हर किस्म की विजिबिलिटी से ज्यादा सीखने को मिलेगा जो हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। थैंक यू फ्रॉम सर, ये माय जो साइड। रिकॉर्डिंग्स हैं, ये हम जी। यूट्यूब उस पे भी डाल सकते हैं। है, ऑलरेडी है, तो हमारी ऑलरेडी है रिकॉर्डिंग, ताकि हमारी इतनी अच्छी बातें होती हैं, लोग इंटरेस्ट होके यहाँ आ जाएंगे। सर। यूट्यूब चैनल है सुनील जी, आप देखिए 9:37 का मैसेज फ्रॉम मिसेस मेंटोर। सर मैं सर, अपने उसमें स्कूल के हमारी बाद वीडियो वीडियो डालिए चला ना, हम सकता हूँ? फेमस लोग हैं। यही है सर, आपके अलावा तो मैं अकेला हूं। हमारा पूरा शो उसमें है, हर एक शो, पहले के 3 एपिसोड और ये चौथा एपिसोड भी कल तक अपलोड हो जाएगा सुनील जी। वाह। Thank सर you, हम अपने sir. स्कूल से और टीचर्स ला सकते हैं? हाँ, एब्सोल्युटली, क्यों नहीं। We encourage कि आप और लोगों को लेकर आए, क्योंकि हमारे डिस्कशन में और रिचनेस आ जाए। जितने पेरेंट्स होंगे, जितने टीचर्स होंगे, जितने स्टूडेंट्स होंगे, उतना हमारा कॉन्वर्सेशन का लेवल, उतना हमारे डिस्कशन का लेवल और ऊपर एक लेवल बढ़ जाएगा। सर, एंड सॉरी, दलाल आई सर वांट टू कल गिव अपनी ये अगली स्टडी क्लास में अब्रॉड अपनी वाला वाइफ लेके सजेशन आएंगे। किसने दिया? स्टडी अब्रॉड सर, वाला सजेशन सुयश ने, सर मैंने सुयश दिया ने। सर। सुयश ने दिया था। सुयश, it is a fantastic topic where you can get all your teachers and students from your school, क्योंकि हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट्स एजुकेट करेंगे इसके बारे में 1 घंटे में, ताकि आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हो, उनको बोल सकते हो हमारे पास भी आए, हम काउंसिल करने को तैयार है, हमारे पास एंड टू एंड सर्विसेज है। आप प्लीज लाइए, Thank you, sir. प्लीज लाइए। हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। जरूर सर, जरूर। ओके, सो So we'll hold on to that excitement. Next session काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे and we are going to have answers to all of them. और हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें हम नई भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, so we'll see कि और क्या क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है। So okay, have a very good night. We'll meet next Friday same time. आपकी Twinkle सोच ma'am. में आपका वापस स्वागत होगा। Thank you so much. थैंक यू Thank मैम। you so Ma'am. much, ma'am. Good night. Bye bye. Thank you Ma'am, so I much. wanted to say one. जी, Ma'am, गुड I नाइट wanted to say ट्विंकल one जी। last thing. Yes. बोल बेटा, तू Ma'am, बिना बोले थोड़ी ना रहेगा। ma'am, you and Tushar sir are very good. Ma'am, you guys are too good. Thank you so thank much. you, thank you, thank you. So help us to be more good. Thank you guys. Stay safe, stay healthy. Everybody, please take care of yourself. अगले हफ्ते मिलेंगे। अच्छा जी। साक्षी मैडम, 1 मिनट बिफोर यू वी एंड द कॉल। साक्षी मैडम, मैं आपको एक नंबर डालता हूं, वो नंबर पे आप कॉल कीजिए। यस, हमारे पास काफी काउंसलिंग कोर्सेज भी है। मिसेस मेंटोर, कैन यू पुट योर नंबर प्लीज? मिसेस मेंटोर, Sakshi madam would like to connect to you. Okay, Mrs. Mentor is just sharing the number. Okay. ये हमारी लैंडलाइन, ये हमारा एक ये हमारे मार्केटिंग का नंबर है जो मिसेस मेंटर अभी डालेंगे। Okay, cool. All right, so ये हमारा ऑफिस का नंबर है, प्लीज कॉल। You can ask for me and Twinkle also. आपको जो भी assistance चाहिए, we'll be more than happy to assist you. Absolutely. Everybody stay safe, stay healthy. Please take care of yourself. Take very good care of yourself. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें encourage कीजिए, motivate कीजिए। अगले हफ्ते मिलते हैं। Good night everyone. Stay safe. Have a great weekend.